very important to read books. Like focused reading time, I think. Books are best friends. It teaches us how to live life. I think it's relaxing and और हम अपनी पर्सनालिटी को सारी डेवलप कर सकें कई उसका नाम था Thank Me Later. So I'm a spiritual guy, तो भगवत गीता सब पढ़ो. And then the smell of a new book. It's a luxury if you are reading a book with cup of coffee. उठाओ जो आपको पसंद हो पढ़ मजा आएगा. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग सुकेश। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बुक्स फॉर सेल्फ ग्रोथ। Books have always, एक तो अगर कहीं पे आपको बात नहीं करनी है किसी से, मेट्रो हो गया, you can just open a book and just read it and time निकल जाता है, पता भी नहीं चलता. And second of all, it increases your reading ability, your pronunciation, your communication. So that's also a plus. Motivational factor ये होना चाहिए कि कभी प्रोफेशनल वे में भी आजकल हर जगह you have to speak a lot, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या यूट्यूब, तो बोलने का ज़्यादा ढंग तब आता है when you read a lot, when you know your vocabulary a lot. So that's a plus if you read a book and you know a lot. So which one is your favorite book? So my father wrote a history book on our India and our Indian history, and you should all give it a read. He has 3 books outside right now. So the major one is Swift Horses, Sharp Swords. So that's available on Amazon. You can go out to check it out. Book I'm more into fiction and non-fiction. So I feel कि physical is better because आप अपने घर में as a showpiece भी रख सकते हो. It gives a very good look to your house. And when you have a book with yourself, it gives a different feeling. Digital में हम जरूर distract हो जाते हैं. We open YouTube या कुछ खुल जाता है. My recent favorite is a book called Good Vibes, Good Life by Vex King. I think it's a really good book. हम youngsters को पढ़ना चाहिए. मेरे हिसाब से it's about the vibe. If your vibe matches with someone, it's really good and you can get a lot of things to know about vibes, how vibe matches and how you should, make your vibe good for other people too. I think कहीं और अपना time waste करने से अच्छा है read a good book. I think books are best friends. So a book will for sure give you some knowledge. So books. Physical one is a great option for people who really want to read. But when you read physically, it actually impact something in yourself. Okay, you're reading, you're putting efforts to read and all that stuff. So I think physical one is much more better. जैसे डेफिनेटली बुक्स पढ़ते हैं, ये हमारा पैशन भी है और बुक्स हमें पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हमारा बुक्स पढ़ने से काफ़ी हमें बेनिफिट हमें मिलते हैं. एक तो बेसिक बेनिफिट हमें मिलता है कि हम उसे कंसंट्रेट कर पाते हैं और क्या होता है ना, बुक्स से आप इमेजिनेशन जो होती है ना, इमेजिन करने की पावर जो होती है वो भी आपकी अच्छी स्ट्रांग होती है, जिससे कि और आप डीपली पढ़ सकते हैं तो चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव सोच सकते हैं. और ये हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी जो माइंड को है स्टेबिलिटी भी काफ़ी प्रोवाइड करता है. और आजकल देखते हैं रील्स का टाइम है तो लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं, तो ये नहीं होता. बुक्स में आप एक जगह रहते हैं तो थोड़ा सा आप स्टेबल फील करते हैं. अगर जो मैं याद करता हूँ, अगर सबसे पहले जब मैं 11th-12th क्लास में था तो हम लोग लाइब्रेरी से बुक पढ़ते थे. शुरुआत प्रेमचंद से होती है, बहुत बड़े हमारे लेखक हैं, बेसिकली बनारस से ही हैं, लम्हे गांव से. तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो बुक्स में है तो उन्होंने जो समाज से जोड़ा हम लोगों को, तो हम लोग उससे कोरिलेट कर पाते हैं. तो हमेशा इन बुक से स्टार्टिंग करनी चाहिए पढ़ने के लिए. मेरा एक सजेशन है लोगों के लिए, इन बुक से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ. तो उससे क्या होता है, जो बुक्स पढ़ने के लिए हमें जो हमारी रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो जागृत होता है. और मैंने ये बुक ली है अपने पापा के लिए. ओके, खुद भी पढ़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं. क्या होता है ना, थोड़ा एज हो रही है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बुक्स पे वो पढ़ते रहे, तो थोड़ा सा मतलब अब एज होता है तो उस हिसाब से चीजें. और बाकी मोबाइल में तो जान नहीं रहे कितना. तो सर मैं अपने पापा को कौन सी बुक गिफ्ट करूं? देखिए, मेरा तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप मुंशी प्रेमचंद जी से स्टार्ट करिए. और जैसे मंटो की हैं कहानियाँ, जो उन्होंने मंटो का जो कहानियाँ पढ़ेंगे तो ये हमेशा सोशल रिवॉल्यूशन से लेकर के रिलेटेड है. कैसे मतलब जो हमारी नारी शक्ति को है उसको बुलंद करना है, या फिर जो भी हमारे गरीब तबका है उनको किस तरीके से मजबूत करना, तो ये सारी चीजें आती हैं. Not as often as I would like to, but I'm trying to start getting back into it again. And yeah. So which type of books you read? I prefer fiction books. Okay.
Yeah, that's probably my favorite. And what inspires you? What motivates you to read books? Usually when I'm away on holiday and I have more time to myself, is generally when I read. And I quite like reading like next to maybe the beach or the pool or just somewhere outside. Yeah. I think it's very important to read books. It extends your vocabulary, helps with imagination. It's honestly very beneficial for you. I would encourage you to read a lot. Probably The Outsiders. That's one I read in school. Very good plot. It's fiction and it's a good read. Anything by Enid Blyton as well. She's also a fiction writer, and I grew up reading a lot of her books, and they're all lovely. Okay. Physical book. I think it's more special, less distractions. Not many people use it these days, which I think is a big shame. Okay. So yeah, I'd say physical books. Okay. I'm currently reading The Seven Husbands of Evelyn Hugo, and it's been good so far, so I'd probably recommend that. I'd say my favourite book is probably Pride and Prejudice. Okay. I love the movie as well, but I think the book is special. I think it has some elements that lack from the film. I think it's relaxing, and I like doing it before bed. I think it's a good distraction from social media and the internet, and I think it helps calm me before I sleep. I think it's good educationally as well. Okay. I find that when I'm reading more regularly, it's easier for me to pick up new information, like with uni and everything. And like Ashai was saying, I think it extends your vocabulary. Physical paper book. Okay. Yeah. I personally like highlighting key quotes and underlining, and I find that I can't really do that as efficiently on an iPad or a tablet. Okay. मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं रीड करती थी Okay. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो मेरे को और थोड़ा सा ट्रेंड भी खत्म हो गया था बुक्स एंड ऑल का. बट अभी फिर से जैसे लोग पढ़ते हैं, बुक रीड करते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी काफ़ी टाइम के बाद. उसका नाम था थैंक मी लेटर. तो वो स्टोरी मतलब पढ़नी चाहिए. थैंक मी लेटर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे को पर्सनल लगा. एक तो बुक पढ़ना इस मतलब बहुत ही अलग चीज़ है. जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, है ना. जब आप नॉर्मल बुक पढ़ रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया वरना बीच में यूज़ करना लगते हो, आंखें दर्द करने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और वो इतना पीस ऑफ माइंड देता है ना आपको, और मतलब बहुत ही अच्छा इंप्रूव करता है कि हाँ एक्चुअली में मैंने कुछ पढ़ा. मेरे को मोटिवेट करता है कि आप मतलब एक अलग ही पीस ऑफ माइंड वो देता है. जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, एक्चुअली डीपली आप उसको चीज़ों को समझ पाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, और वो क्यूरियोसिटी ना जनरेट होती रहती है अंदर से कि वो बुक मैंने पढ़ी थी तो मैं उसको पढ़ लूँ वापस से. तो वो चीज़ है. तो बुक तो पढ़नी चाहिए, वो डेफिनेटली इट्स अ लग्जरी टू. I'm not gonna say कि मतलब आप बिल्कुल डिजिटल छोड़ दो. ऑब्वियसली उसने बहुत सारी चीज़ इंप्रूव करी है, इजी करा है लाइफ को. बट हाँ, जब भी मतलब बुक रीड करना इज लाइक अ मेडिटेशन. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो अच्छे से, तो आप मोटिवेट हो जाओगे डेफिनेटली. सो हे गाइस, डू फॉलो ट्रेंडिंग सुकेश. Thank you. So I read many books regarding international relation, like philosophy of international relation, like Plato to Marx. I read also spiritual books too, like Bhagavad Gita and Naneshwari. Gita. Yeah, Naneshwari also there. So that kind of books I used to read. And which type of books you will recommend to our viewers or our youth of India to get them inspired? Any kind of book which motivates them, like if पैसा मोटिवेट कर रहा है तो इकोनॉमिक की बुक पढ़ो. स्पिरिचुअलिटी मोटिवेट करे तो स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़ो. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ बुक. एवरी बुक हैज दैट स्पेशल कंटेंट व्हिच विल लीड योर लाइफ टू सर्टेन स्पेसिफिक गोल. तो कोई भी बुक पढ़ लो. But will you suggest precisely for our viewers or a new reader to like that will help them to grow in life, to grow in their career, to grow in their universe? तो आई एम स्पिरिचुअल गाय, तो भगवत गीता सब पढ़ो. स्पिरिचुअलिटी में आपको लाइफ में मोटिवेट करके आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में बता दिया है. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है आज की लाइफ में. लाइक आई एम स्टडीज मोर अबाउट टेकिंग इंडिया टू इंटरनेशनल अरेना, तो उस काइंड की बुक पढ़ो. इकोनॉमी की सारी बताई है, तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ो. इकोनॉमी या फिर आपको स्पेसिफिक एंगल से, That is for the financial help book, Rich Dad and Poor Dad. देन कुछ ऐसे बुक्स है लाइक इफ आई इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, तो जीसी लियोंग की एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है, बहुत अच्छी है वो. देन हिस्ट्री के लिए अब मोटिवेट हो या फिर अपनी इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, तो लाइक क्लास टू इंडिपेंडेंस एक बुक है हिस्ट्री के रिलेटेड, जो लाइक 1757 से 1947. देन बिपिन चंद्रा की हिस्टोरिकल बुक है सिंस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, वो भी है, वो भी पढ़ सकते हो तुम. So ये तो यूपीएससी वाली कुछ बुक्स आ गई यहाँ पे. समझ रहे हो? यूपीएससी वाली समझ रहे हो? है नहीं, बट ये मजा आता है पढ़ने में.
very rock solid reason to read. Why people of Delhi should read? Knowledge, to gain the knowledge and put their life on a particular track, which will help them to achieve their goals. Okay, so book reading help them. Reading help everybody to achieve their goals. Yeah, definitely. Okay. So thank you so much, sir, for your time, for being so kind, and you are a very knowledgeable person. And please subscribe Trending Sukesh. These guys are really helping society to read the books and to lead their life towards the happiness and their goals. So help them, subscribe them. Well, I read a lot of fiction. They're mostly like romantic comedy or thriller. But every book that I have ever read has some sort of good message, or if it is, a funny book, a great storyline, something like that. So, and why I really enjoy reading book, I feel that a writer lives many character while writing a book, and it is I find it very interesting that one person can dive into a character of a villain, a sidekick, or maybe a protagonist. So that is something which I'm like really interested in. And secondly, about what I really like about books again is the way things are described. They don't do that way in movie. I mean, it's unmatchable. So I really like books. I don't read too many books, but I like reading. Movies and videos are fine, but they're not like as good as books. Once you start reading books, there's no going back. I started reading books thinking कि मेरा vocab ठीक होगा, and eventually I really started enjoying the storylines. So it's like I said, I don't read a lot of books, but if it's interesting, I would complete a book in 1 or 2 nights as well. So Okay. yeah, basically it's the story that motivates me कि okay क्या होने वाला है, what next. So I read I would read books like It Starts With Us or Verity, and then in Indian authors I really enjoy Durjoy Datta. So those books, like the very basic ones, but with nice stories. Physical any day, physical. why physical? I mean, when you buy a book, the excitement to like hold it and read it, and then the smell of a new book. Digital books, I don't think Kindle and anything else can ever give you an experience of holding a book with a cup of coffee maybe, and that whole environment. No offense to digital readers, but I personally prefer reading like books, proper books. That's how I like it. I recently read Verity. It's a thriller. I came across it now. It's been like in the market for a long time, and I think it has a great storyline and an even better ending. So one should definitely read it. And what is the most preferable time for reading? After wake up or while just going to sleep, or what will you suggest? Like you seems like a very good reader. I read every time I feel like using my phone. So to keep my phone aside, I would rather pick a book. But Hack. yeah, but the best time to read it is, I would say, in the morning. With a cup of coffee, it's great. It's a luxury if you are reading a book with cup of coffee. बुक का नाम है दोगुलापन बाय अश्नीर ग्रोवर. शार्क टैंक में आए थे. इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर यू कैन से, और एंटरप्रेन्योर मेकर. ओके, सो और कोई बुक जो आप करंटली अभी पढ़ रहे हैं? हाइपर फोकस. क्रिस बेली में भी. क्रिस बेली हाइपर फोकस बुक का नाम है. तो दिन भर काम वाम से, मैं तो जॉब करता हूँ, दिन भर काम वाम से होता क्या है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मेंटली टाइप ऑफ हरासमेंट कह सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक फोकस की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं एक जगह ध्यान लगाना होता है. तो कहीं ना कहीं हम प्रेफर करते हैं कि बुक ही पढ़ लें. एंड बुक लाइक एवरीवन से कि बुक्स इज अ गुड फ्रेंड टाइप ऑफ, जो आपको सपोर्ट करे, आपको सही रास्ता दिखाए, इवन नॉलेज दे. तो कहीं ना कहीं मैं दोस्तों से ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद करता हूँ. तो ऐसे मैंने सीपी पर देखा कि कुछ बुक्स थे अच्छे, तो मैंने वहाँ से परचेज की, एंड अभी कुछ दिनों से मैं उसे पढ़ रहा हूँ. एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड, बट मेरे को कहना इधर ये है कि यार बुक से ये है कि मैं मेरे तो एक लाइफ सर्कल है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं इधर उधर फ्लक्चुएट करती है दिनचर्या से हम लोग के.
तो जो बुक है वो करता है आपको एक सही रास्ता दिखाता है, एक सही नॉलेज देता है कि यार करना क्या है, तुम इस मुश्किल से कैसे निकलोगे। इस बंदे ने जिस राइटर होता है वो उस चीज़ से कैसे वो निकलता है, तो वो अपना एक आपको पाथ देता है, टाइप ऑफ वे, आप इस तरीके से करो, कहीं ना कहीं ये आप पे इफेक्ट करेगा और आप उस चीज़ से निकलोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है। नॉर्मल बुक यूज करो। I hope this message will inspire our youth to read more books and help them to grow in their careers, in their life and in their universe. Exactly. So don't forget, please go and तो subscribe. हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जैसे कि वीडियो में हमने जाना कि लोग बुक्स क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे उनका क्या मोटिवेशन है और बुक्स पढ़ने से लोगों का क्या डेवलपमेंट होता है और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों, बुक्स पढ़ने से लाइफ में चेंजेस ज़रूर आते हैं। मेरी भी लाइफ में आए और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में बुक्स पढ़ने से चेंजेस आए हैं। और जैसे कि आप लोग को ये बात भी पता है कि आज का दौर जो कि सोशल मीडिया का दौर है, एवरीबडी इज स्क्रॉलिंग, एवरीबडी इज बिजी विद द डिजिटल स्क्रीन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, हर किसी व्यक्ति को बुक पढ़नी चाहिए, चाहे वो डिजिटल माध्यम से पढ़ी जाए या वो फिजिकल माध्यम से पढ़ी जाए। बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, आपका ओपन माइंड होगा, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और आपके जीवन में काफ़ी तरह के पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।